नमस्कार दोस्तों, मैं सनी। वेलकम टू इंडियन मैकेनिक। आज हम फिर आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि KTM 200 में नॉकिंग प्रॉब्लम होने के बाद उसका टोटल बॉडी कैसे साफ किया जाता है। तो चलिए KTM 200 का टेस्ट ड्राइव लेते हैं, देन वर्कशॉप में आने के बाद पता करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हो कि गाड़ी का टोटल बॉडी हम लोग खोल रहे हैं। खोलने के बाद पता लगेगा कि टोटल बॉडी में प्रॉब्लम क्या है। आप देख सकते हो कि टोटल बॉडी में कितना कार्बन है। इस कार्बन की वजह से गाड़ी में नॉकिंग, RPM एंड पिकअप, ये तीनों चीज़ में इशू था। इसको क्लीन करते हैं, देन उसके बाद देखते हैं गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है। दोस्तों, टोटल बॉडी साफ करने के लिए टोटल बॉडी क्लीनर भी आता है, पर बहुत सारे मैकेनिक टोटल बॉडी क्लीनर नहीं होने से कोई भी तेल यूज़ कर लेते हैं। अगर आपके पास टोटल बॉडी क्लीनर नहीं है तो आप इसको पेट्रोल से प्रॉपर धुलाई कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
थ्रॉटल बॉडी क्लीन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो गाड़ी का आरपीएम ज़रा भी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, आरपीएम का आइडियल आरपीएम में रह गया एंड गाड़ी का पिकअप वगैरह सब ओके हो गया। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।